हाय वेलकम टू श्वेता's व्लॉग्स। सो मैं बना रही हूँ कोडाईकनाल व्लॉग्स, सीरीज ऑफ व्लॉग्स, जहाँ पे मैं दिखा रही हूँ क्या क्या करते हैं हम कोडाईकनाल में एंड व्हाट ऑल यू कैन डू, विजिट प्लेसेस एंड ऑल दैट। सो यस, मैं बहुत प्लेसेस दिखा रही हूँ एंड ऑफ द थिंग लाइक सुबह तो हम चले जाते हैं टूरिस्ट स्पॉट्स देखने के लिए, ये सब देखने के लिए, बट व्हाट यू कैन डू एट नाइट, because this is a very small city and usually by 6:30 जो सारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं ये सब शट हो जाते हैं। तो उसके बाद जो लोग दिखते हैं, टूरिस्ट सब दिखते हैं, वो भी by 7:30 they will vanish and by 8:30 पूरा टाउन जो है वो ख़त्म हो जाता है। सो व्हाट ऑल वी कैन डू, so this is our room and the best thing you can do is sit in your room and enjoy watching TV or enjoy talking to your family and all those things you can do. So apart from that you can get ready, और जैसे मैंने अभी रेडी हो चुकी हूँ जाने के लिए फॉर ए वॉक। सो एज आई सेड इट इज़ अ वेरी स्मॉल टाउन, सो यू कैन गो अराउंड बाय वॉक एंड एक्सप्लोर द प्लेस, क्या मिलता है वहाँ, क्या क्या है वहाँ पे, ये सब। एज द टाउन इज स्मॉल द पीपल विल ऑब्वियसली गो ऑफ बाय 8:30, सो ओनली लोकलाइट्स उसके बाद दिखते हैं आपको। So you can make out that okay, these are the people, localites who stay there till 10. Usually shops, restaurant ये सब 10 तक खुला होता है। So you can just go for a long walk for dinner और चाट खाने के लिए या चॉकलेट्स खाने के लिए, या वहाँ पे बहुत सारे हॉट ड्रिंक्स या जैसे कि हॉट चॉकलेट ये सब मिलता है, तो वो सब खाने के लिए। इफ़ यू आर ए नॉन वेज देन देयर आर लॉट ऑफ नॉन वेज स्नैक्स हैपनिंग इन द रोड साइड, और डेलिकेसी भी मिल जाता है आपको होटल्स में। So you can search for that and yes, you can go there, do shopping like chocolates या sweaters, ये सब आपको खरीदना है तो you can go in the evening or night, and there are lot of churches which will be open and you can have a nice quiet dinner in good place and buy chocolates or whatever you had listed, you can go for those shopping. So by 8:30 9:30 ये सब local shops खुले होते हैं, so you can go there and see what all is available there, what is special, उनका जो होता है वो सब आप देख सकते हो, and you can enjoy going a walk with your family. And you can actually explore what all streets are there, like what all you can plan to buy next day if it is closed. और जैसे आप देख रहे हो ट्रैफिक भी पूरा कम हो जाता है, so there will be no cars or anything running around, so you can walk and come. And at midnight, like if you are a late sleeper like me, you can enjoy the view. So मैं अपने balcony से देख रही हूँ and you can enjoy the scenario sitting in your balcony, and बहुत cold होता है, so better you wear some sweater, shawl, ये सब पहन के आप बैठ जाना, because first day I was so sure that I am from the place where it is already cold, so I didn't wear anything. And before I went to sleep I had cold attack actually, so वो हो जाता है, तो इट्स बेटर यू एंजॉय योर बालकनी विथ पैक्ड, हो जाता है कि कोल्ड स्ट्रोक हो जाए, तो इट्स बेटर यू हैव योर hot cup of tea or coffee in between, because if the hotel is providing you with kettle cups and all, जैसे कि हमारे होटल ने दी थी, तो if you have instant coffee or instant tea you can just enjoy that. And routine skin care is a must, क्योंकि यहाँ पे ड्राई हो ही जाता है, बिकॉज आई हैव ए वेरी ड्राई स्किन, सो टेकिंग केयर ऑफ स्किन इज ऑल्सो ए टास्क हियर, बिकॉज फट जाता है एंड बिकॉज ऑफ द कोल्ड इट बिकम्स इवन मोर कोल्डर. एंड एट मिड नाइट यू कैन सी अराउंड 11-12 तक तो पूरा सिटी खत्म हो जाता है, एंड इवन द रिजॉर्ट्स और वॉट एवर दैट ऑल्सो विल बी क्लोज, एंड दिस इज हाउ द कोल्ड विल बी. आप देख सकते हो स्मॉल स्मॉल फ्लेक्स की तरह गिर रहा है, सो दिस
cold it will be if you go in peak seasons. So जैसे कि snowfall होता है वैसे ही यहाँ पे snowflakes small minute होता है, पर it is like misty snow, so it is very cold but you can't even touch and catch it, you can just feel it. So this you can enjoy at midnight क्योंकि as the city will be totally silent and lights will be off, ज़्यादा lights नहीं होते, so you can see this fog coming near to you because vehicles नहीं जाते तो it won't get disturbed, so it comes to you and you can just enjoy the fog if you go in foggy season. नहीं तो आप balcony में बैठ के view जो होता है उसको आप enjoy कर सकते हो and it's really nice. उसके बाद next day हम गए dinner के लिए again, so there are lot of dinner options hotels. If you are a non-vegetarian then और भी बढ़िया वहाँ पे ज़्यादा आपको मिल जाएंगे. So we can have a quite nice dinner with family. और evenings में आप again you can explore all this ice cream, momos, ये सब. So this is in Hilton Cafe. So you can go there, have momos and all those stuff, which is like if your kids are craving for some fusion. So यहाँ पे आप लेके आ सकते हो. There are a lot of pizza corners, cafes which provide pizzas and fusion food. So you can go there and enjoy and feed your kids what they actually crave for. सो ये एक प्लेस था, बहुत बढ़िया था, अच्छा था. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन रैंडमली गो इन द स्ट्रीट्स वेयर यू कैन फाइंड 1 or 2 places where you can hang out. तो हम यहाँ पे अभी जा रहे हैं डोमिनोज पिज़्ज़ा पे because it is bit familiar to us and easily allocatable. So apart from that you can go and explore other markets or shops which are selling quite a large varieties of chocolate. Street food आप try कर सकते हो and you can just hang around with your family or friends and you can visit churches which is like huge है. You can at the evenings you can try charts like this which is available in streets and you can go for shopping. तो लेक साइड में आपको ज़्यादा से ज़्यादा शॉपिंग स्वेटर्स के लिए, ब्लैंकेट के लिए मिल जाता है. सो यू कैन गो देयर एंड just go around that. So it is a huge nice place and you can go for churches. जब हम गए थे तो as I said it was New Year Eve, so the church was literally decorated and it was really nice. So you can visit a church or a temple जो भी है. So by 8:30 तक 9 तक खुला होता है few and after that sit in your room and enjoy ice cream as we did. I really like eating ice cream in a cold place. It's really freezing and yummy. So that is what you can do. You can scooch in into your blankets and enjoy. So again late night मैं अपनी balcony में हूँ and this today actually the fog is very less as you can see. So every day is a different, so enjoy every different day because एक दिन बहुत ज़्यादा आपको fog मिल सकती है, एक दिन नहीं हो सकता है. And people next to you can also they will be having their own fun. तो आप वो भी देख सकते हो बैठ के balcony में as I was doing and you can see far away lights were which was yesterday fog के वजह से नहीं दिख रहा था. So I am just enjoying all those day by day things. So every day it is a different. Don't just scooching into your bed and stuck there. So you come out and enjoy. एक दो चेयर लगा लो and if you can enjoy with your kids, do some games, play some games or do some activities or storytelling, ये सब आप कर सकते हो. So apart from that you can just sit alone and enjoy the silence, the wind, the fog which is coming and all those stuff. So yes, I really like doing that silent bed naked because in Bangalore and all big cities you can't sit silently somewhere. And as it was New Year Eve, they were cracking crackers and all, so it was really nice to sit and watch those things. And अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो you can just go on the streets and take your partner and go for a walk
बेहतर है if you are girls, if you are have girls and all that, it's better to be safe coming into the room early, like 10:30, so you can be in your room and enjoy all these things. Morning तो आपको बहुत सारे options होंगे. You can just go in random roads, and I actually explore so many roads, and take pictures and all that. So रात को आप ये सब कर सकते हो. As this is a small city, I don't know whether they have pubs and nightlife. कुछ ज़्यादा नहीं होगा शायद, because by 10:30, 11:30 तो मैंने देखा even the resorts were closed. So I don't know whether you can find something like that. And if you are safe enough and good responsible drivers, you can take your car and go for a long drives, and come back soon and then enjoy your stay. So best thing is you book a nice view restaurant वहाँ जहाँ पे आप evenings nights बैठ के आप enjoy कर सकते हो. I really like sitting in balcony, sipping my hot cup of tea and see all this happening in front of me. So it's really nice. And if you can bring some snacks, so और भी बेहतर है, you can just sit and eat those snacks when this is like view is so nice. So yes, these are the things we did. We just explored a few hotels, a few churches, and few shopping, and ate ice cream and all those stuff. So really enjoyed looking into this. And जहाँ भी मैं जाती हूँ, I usually sleep very late, so it has become a habit now. So I don't want to disturb others. Like my husband will be sleeping early because he has to drive next day, or he would have drove for a very long time. तो उनको मैं डिस्टर्ब नहीं करती, अपने एक चेयर लगा लेती हूँ, and I'll sit in the balcony and enjoy seeing the sceneries or nightlife. ऐसे ही देखती रहती हूँ. एंड सिटिंग अलोन फॉर क्वाइट टाइम, जो हमारा टाइम होता है वो बहुत ही ज़रूरी है. एंड आई रियली फील इट गिव्स मोर हैप्पीनेस. एंड यस, इफ़ यू कैन इंडल्ज इन फैमिली टॉक्स और किड्स जो आपके पास रहना चाहते हैं, सो और भी नाइस होता है उनके साथ टाइम स्पेंड करना, बिकॉज ऑब्वियसली डे टू डे में हम इतना कर नहीं पाते. सो नेक्स्ट डे वी जस्ट वेंट फॉर अ लॉन्ग ड्राइव एट नाइट. इट वॉज रियली सुपर. थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस.